permutation means arrangement. And combination. Combination means selection. Right? अब मैंने आपको दिया क्या? Suppose I'm giving three letters, that is A, B and C. अब मैंने बोला इसको अरेंज करो डिफरेंट डिफरेंट, क्या होगा? एक चीज बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा? A मैंने दिया तो ये बनेगा C B बन सकता है, तीसरा क्या बन सकता है? B A C बन सकता है, B C A बन सकता है, C A B बन सकता है, C B A बन सकता है. So the total number कितने बन गए? टोटल 6 बन गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ इज 6. So we can write basically तीन नंबर था ना, 3 फैक्टोरियल. क्या लिखेंगे इसको? 3 फैक्टोरियल. इसका मतलब है 3 into 2 into 1 that is 6 कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल. जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या है A B C D E F G and so on. इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है, इसका मतलब है 3 नंबर को 3 लेटर पे सेलेक्ट करो, 3 लेटर सेलेक्ट करना है. इसका मतलब A B C B C D C D E, उसके बाद A F G, उसके बाद C F C F and so on. तो these all are, जितने भी सिलेक्शन हो जाएगा इन सब को हम बोलेंगे क्या है? these all are combinations. इसका मतलब क्या है? this is single step. हमने क्या, हमें सेलेक्ट करना था किस चीज को, हमने क्या किया? उसको उठाया, हमने उसको सेलेक्ट करके उठा के निकाला. बट अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट में 2 स्टेप लगता है. आपने अगर इसमें से ABC स्टेप को सेलेक्ट करने के बाद अरेंज किया तो आप यहाँ लिखेंगे परम्यूटेशन. नोट करके लिखेगा permutation is 2-step process. 2-step process, right? While combination is single step process. Single step process. So I have you all are ready. So देखो इसको कैसे लिखा मैंने? परम्यूटेशन n फैक्टोरियल अगर नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे इसको that is n minus 1 n minus 2 and so on 3 2 1. and परम्यूटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? that is NPR, where P is the permutation coefficient and things taken are at a time can be represented by n factorial R factorial, sorry, n minus R factorial. This is the notation of factorial. इसको हम क्या बोलते हैं? Factorial. This is called factorial, right? कहीं पैसे लिखना होता है, कहीं पैसे लिखना होता है, सारे बुक में अलग अलग होते हैं. तो अगर IT की फैक्टरी की बात करो तो ये होगा. नॉर्मली आपके पास NCERT कंडीशन में यूज होता है factorial. इसका मतलब क्या होता है? n things taken are at a time. n कोई काम था, चीज था हमारा जिसको हमने r टाइम पे कंप्लीट किया, उसको r टाइम पे हमने क्या किया? उसको कंप्लीट किया. that is known as NPR. ठीक है ना? and P is the permutation coefficient. आप इसको बोल सकते हैं P is the permutation coefficient. P permutation coefficient. So students, pause the video.
थोड़ा सा सवाल दे रहा हूँ 5p3 अगर इसको ब्रेक करना होता है तो 5 फैक्टोरियल है 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट मींस 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं इसको 5 into 5 minus 1 5 minus 2 5 minus 3 कर सकता हूँ multiplied by 5 minus 4 and 5 minus 5 factorial upon 2 into 2 minus 1 2 minus 2 factorial finally क्या लिखेंगे इसको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 factorial यहाँ पे 2 into 1 into 0 factorial इसी करके और सिंपल यू कैन से दैट 0 factorial जो होगा आपके पास इसकी वैल्यू ऐसा होगा यहाँ पे 0 का मतलब यानी यहाँ 0 factorial इसका मतलब 1 होता है तो आप इसको कैंसिल आउट करें 1 इससे जॉब की करनी जाएगी क्या आपके पास 26 अब डायरेक्ट कर सकते हैं मान लीजिए मैंने 6p 5 लिया है अब क्या लिखूँ 6 factorial by 6 minus 5 6 into 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कर दो और उससे भी क्या आएगा तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा आपके पास 30 120 एंड NPR जब मैंने लिखा था तो नंबर ऑलवेज 1 थी इसलिए क्या लिखा था इसका मतलब अपने से जो I जो होगा ना नेगेटिव नंबर so just pause the video and note down in this case always I is greater than 1 and less than equals to 1 if R and N both are positive integers then write NPR equals to while NCR that is combination with NCR n factorial upon R factorial n minus R factorial in this case always R is lying between 0 to 1 here also the R and N both are positive integers suppose I am giving 5c इसका मतलब क्या है 5 factorial by 2 factorial 5 minus 2 factorial so 5 factorial by 2 factorial 5 into 4 into 3 factorial 3 factorial cancel out here 2 into 1 can write so the answer is 10 और इस टाइप के सवाल ऐसे मिल सकते हैं 5 4 राइट इसका मतलब नहीं है 5p4 ये लिखना चाहिए 5 factorial by 5 minus 1 factorial 5 minus 4 factorial that is 5 factorial और 2 factorial तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 so the result is आपके 12 numbers so students pause the video and note down and do more practice NCERT के और addition वाली जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज सारा कंप्लीट कर एंड यहाँ तक जितना मैंने कर दी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके पास सॉल्व हो जाएंगे और जो भी डाउट्स होगा ना फर्दर कमेंट सेक्शन में पूछिए या मुझे व्हाट्सएप करें राइट एंड जो भी आगे का वीडियो बनेगा देन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे टॉपिक सो डू मोर प्रैक्टिस एट योर होम एंड परमुटेशन के क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन को फील करो करें ठीक है ना इसके बाद इसको फोकस मतलब सोचिए इसके बारे में
तभी ये सवाल हो सकता है। बड़ा आसान सवाल, ज़्यादा टफ नहीं। सो गुड प्रैक्टिस सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर